हाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में आप डिस्प्लेसमेंट करंट का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए हम आज एक क्वेश्चन करेंगे, पर उस असल क्वेश्चन तक जाने के पहले मैं आपसे दो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं एमसीक्यू के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग at which of the following points can we detect an electric field? इनमें से किस पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट कर सकते हैं? A point near a straight wire carrying a steady current. There is a wire, straight wire, and it is carrying a steady current. Steady means current which does not change with time. Can we detect, will we detect rather, an electric field in surrounding space of this wire? इस वायर के आसपास में क्या हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करेंगे? ऐसा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि ऐसा एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में पढ़ा है दैट ए करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस करंट कैरिंग वायर विल इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, बट इफ द करंट इज कांस्टेंट, the magnetic field that is created by the current will also remain constant. If magnetic field at this particular point is B naught, it will remain B naught, it will not change with time. So, this current carrying wire will create a magnetic field and that magnetic field will remain constant with time. There is no question of any electric field being created by this current carrying wire. So, the question is asking you whether you will notice an electric field over here. The first option does not appear to be correct. Then the second one, of course we are disregarding any relativistic effect जो आपने अभी नहीं पढ़ा है। हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। A point inside a solenoid, there is a solenoid and it is carrying some current and there is a point inside it. The solenoid is also having a steady current of 5 ampere. Will there be any electric field inside the solenoid? Again the question is very same and the answer is also same. There will be no electric field. This current in the solenoid will definitely create a magnetic field here, but that magnetic field will remain constant with time. There is no question of any electric field. The third option says there is a point near a wire that is carrying an alternating current of 5 ampere. The alternating current is a current which changes with time. If this current is fluctuating with time, then the magnetic field that it has created in its surrounding space will also fluctuate with time. If the current is changing, increasing or decreasing, then magnetic field at any particular point will also increase or decrease accordingly as the current increases or decreases. So, when the current is fluctuating, we will have a magnetic field and that magnetic field will be time dependent, right. And in the chapter of electromagnetic induction, you have studied that a time changing magnetic field induces an electric field. A time changing magnetic field induces an electric field, which you called as induced electric field. Can you recall that? Whenever we have a time changing magnetic field, it will induce an electric field. So, this current which is time changing will have a magnetic field in its surrounding that is time changing, and that time changing magnetic field will induce an electric field. So, definitely near such a wire we expect some electric field. So, this option appears to be correct one. Let us move on to the next question. The next question says, in which of the following cases can we expect a magnetic field in space between the plates of a parallel plate capacitor? There is a parallel plate capacitor, and in which of these cases do we expect to see a magnetic field in the space between the plates of the capacitor? The first case is the capacitor is connected to an AC voltage source. If I connect this capacitor to an AC voltage source, what will happen? The charge on the capacitor keeps changing with time, right? As the voltage fluctuates, as the voltage changes with time, so will the charge on the capacitor change with time. And there is an electric field between the plates of the capacitor. This electric field, all of you must be knowing, is sigma upon epsilon naught,
where sigma is nothing but charge per unit area on the plate. So sigma is charge density, surface charge density on the plate, which is Q by A. If Q is the charge and A is the area of the plate, Q by A is sigma, sigma by epsilon naught is the electric field. Now what is happening? Because the voltage is changing, so the charge is changing, and because the charge is changing, therefore this electric field between the plates of the capacitor is also changing with time. So when the electric field is changing with time, in this particular chapter of electromagnetic waves, we have been introduced to a new concept that when electric field changes with time, it induces a magnetic field. So in this space there is an electric field and it is not constant, it is changing with time. So it will induce a magnetic field in the space itself. So time changing magnetic field induces electric field, and the new concept that you learn in the chapter of electromagnetic wave is that time changing electric field also induces magnetic field. So between the plates of the capacitor there is an electric field which is changing with time, and therefore it will produce a magnetic field. So yes, we do expect to see magnetic field here. The first option appears to be correct. A capacitor is connected to a DC source and the circuit is in steady state. When a capacitor is connected to a battery and the circuit is in steady state, means charging has been completed and charge on the capacitor is no more changing. When the charge on the capacitor is not changing, the electric field between the plates is not changing. When electric field is constant, there is no question of any magnetic field. So in this particular case, we don't expect any magnetic field here. In the third one, immediately after the capacitor is connected to a DC source, when you put on the switch to charge the capacitor, immediately after you put on the switch, what happens? Charge begins to flow and gets accumulated on the plate, right? As soon as you put on the switch, immediately after that, charge will begin to rise on the plates of the capacitor. So at that point in time, the charge is growing, it is changing. So when charge is changing, the electric field will be changing here, and whenever there is a time changing electric field, it will induce a magnetic field. So again we expect some magnetic field in the space between the plates of the capacitor. A charged capacitor is getting discharged through a resistance. When you have charged a capacitor and now you allow it to get discharged through a resistance, again the charge on the capacitor plate is reducing, therefore the electric field between the plates is decreasing, reducing, charge is decreasing and electric field is also decreasing. So whenever you have time changing electric field, there will be an induced magnetic field, right? So time changing E induces B, time changing B induces E. This is the concept that you learn basically throughout, as a climax rather I would say. These are the two important things that you learn as a climax in your entire course of electromagnetism, right? So now let us come to today's question. What is the question? A parallel plate capacitor has plate area A and plate separation D. There is a parallel plate capacitor, area of each plate is E, separation is D. It is connected to a battery of EMF B and internal resistance R. There is a battery of EMF B and internal resistance of the battery is R, and the connection is made at time t is equal to 0. Consider a plane surface of area A by 2 parallel to the plates located symmetrically between them. These are two capacitor plates, right? Area of each of them is A. Now you have to imagine a surface, plane surface parallel to these two plates. Between these two plates, imagine a hypothetical area of area A by 2, not equal to the area of the plate, half the area of the plate. Just imagine a hypothetical surface between the plates. Find the displacement current through this area as a function of time. Find the displacement current through this area as a function of time, right? So this is the question. Actually इस क्वेश्चन का आंसर देने का जो तरीका होगा एग्जाम हॉल में वो बहुत ही सिंपल होगा, हम देखते ही आंसर लेते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले थोड़ा सा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। हालांकि इतने कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम डिस्कवर करेंगे। देखिए
जैसे ही आपने एक कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज होने के लिए कनेक्ट किया, बैटरी का रेजिस्टेंस है, मतलब सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया चार्ज होने के लिए। तो नेचुरली यू ऑल नो, you have studied this in the chapter of current, electricity or electrostatics, that charge on capacitor varies with time according to this equation. Charge on capacitor changes with time according to this equation. This is the maximum charge, Q naught, Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by tau. Tau is the time constant, which is R into C. So in a DC circuit, as soon as you put on the switch, the charge starts building up on the capacitor plate, and the charge varies with time according to this equation. तो जैसे ही कैपेसिटर को आपने चार्ज करने के लिए स्विच ऑन किया, चार्ज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग विथ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. नाउ द चार्जिंग करंट, द करंट एट एनी टाइम t in this circuit, what will be value of current at any time t in the circuit? It is dq by dt. ये भी आप बच्चों को याद होता है डायरेक्टली. The current is I naught e to the power minus t by tau. I naught is the maximum current in the circuit, which is V by R. R is the resistance in the circuit, V is the EMF, V by R is maximum current, e raised to the power minus t by tau. Tau is R into C, which is known as time constant. या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो we will get that. Of course, all of you must be knowing this. So this is our capacitor which is getting charged. यहाँ सिर्फ कैपेसिटर को दिखाया है मैंने, हाँ ये सब नहीं दिखाया है. So this is capacitor that is getting charged at certain time t. After I put on the switch, I start counting time. So at time t, let us say charge on this plate is Q and this plate is having a charge of minus Q. The current is still there, that means charge is still growing. At any time t, this is the value of charge, this is the value of current. Current is there, means charge is still increasing, right? Now this is the hypothetical area that is placed perpendicular, I would say that is placed parallel to the surface of the two plates. These are two plates, and here you have a hypothetical area of A by 2. A is the plate area, this hypothetical area is half the plate area. A by 2 is the area of this particular plate. Now there is an electric field between the plates. What is the value of electric field? The electric field is of course Q by A epsilon naught, sigma by epsilon naught. Sigma is Q by A. That is the electric field at time t between the plates of the capacitor. Now what is flux through this particular area, this hypothetical area? What is the flux of electric field through this hypothetical area? Flux, this is the direction of electric field, this is the direction of area vector. So what is the flux? E into A by 2, electric flux. Area A, electric field E. So A into E, because area is A by 2, so we will write electric flux through this area A by 2 will be equal to E into A by 2. E is nothing but this quantity, Q by A epsilon naught. So if you multiply this with A by 2, it will become Q by 2 epsilon naught. So the capacitor is getting charged. Please picturize this situation. There is a battery, charge is flowing, charge on the capacitor plates is increasing, therefore electric field between the plates is increasing. I am imagining a hypothetical area A by 2. Through that area electric field lines are passing, so there is a flux through that area. That flux is electric field into area A by 2. So electric field into area A by 2, this is electric field into area A by 2. At any point in time, the flux through that area is Q by 2 epsilon naught. इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है. जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप. नाउ द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू एनी एरिया इज डिफाइंड एज, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो आपको याद आएगा कि किसी भी गिवन एरिया के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट को आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. डी फाई मतलब rate of change of electric flux through the area into epsilon naught. This quantity has a dimension of current. It is not at all a conventional conduction current. किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जो करंट होता है, चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट होता है, वैसा कोई करंट जैसा चीज यहां है नहीं. ये एक मनगढ़ंत करंट है, आप ऐसा सोच सकते हो, जिसका नाम करंट नहीं है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. इट इज नॉट एग्जैक्टली करंट, बट इट हैज गॉट डायमेंशंस ऑफ करंट.
This is a मनगढ़ंत quantity, it is a hypothetical quantity, and it is defined as epsilon naught d phi E by dt. This quantity has got dimension of current, it has unit of ampere. So if you have an area A by 2, any area, A by 2 is just an example in this question. If you have a given area and flux of electric field through that area is changing, electric field is increasing or decreasing because of that flux is changing. In that case, we say that there is a current through this area, not the normal conventional current. It is a hypothetical current, displacement current, and it is given by epsilon naught d phi E by dt. So if we calculate the displacement current through this red area, what do we get? Very simple. Displacement current through this area will be epsilon naught d phi E by dt. Now we already know the electric flux through this area. This is electric flux through the area, right? So d phi by dt is nothing but 1 by 2 epsilon naught into dq by dt. थोड़ा गौर कीजिएगा प्लीज. डिस्प्लेसमेंट करंट क्या एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए. डी क्यू बाई डी टी क्या है? डी क्यू बाई डी टी इज रेट एट विच चार्ज इज ग्रोइंग ऑन द कैपेसिटर प्लेट विच इज नथिंग बट दिस करंट. ये जो नॉर्मल यूजुअल वाला करंट होता है, कंडक्शन करंट, जो वायर में करंट है, वो करंट की बात कर रहा हूं. दैट दिस करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस चार्ज. So when I find displacement current, epsilon naught d phi E by dt, epsilon naught into differentiation of this, 1 by 2 epsilon naught is constant, so dq by dt is current, so this is epsilon naught, 1 by 2 epsilon naught is constant and dq by dt. So epsilon naught gets cancelled out and you get 1 by 2 I. What does it mean? It means through this area, through this particular area, the value of displacement current is nothing but I by 2, where I is nothing but this usual current, normal जो current हम समझते हैं वो वाला current है. वायर में ये current है I, यहाँ तो कोई वायर है नहीं, यहाँ तो कोई normal sense वाला current है नहीं. पर फिजिक्स के लोग ऐसा कह रहे हैं, आपको ऐसा मानने को कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ये करंट I है. आप तो ऐसा सोचो कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे भी करंट है, ऐसा सोचो. पर ये नॉर्मल कन्वेंशनल करंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है. इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं. पर तुम एक बार सोचने को ऐसा मन में सोच सकते हो कि पूरे लूप में ही करंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या कहते हैं कि भाई ये कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो खाई है, इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई चार्ज यहाँ से यहाँ जंप तो कर नहीं रहा है. करंट का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज यहाँ जाता है यहाँ बैठ जाता है. लेकिन अभी मैं तुम्हें ये सोचने को कह रहा हूँ कि ऐसा सोचो, कोई बुराई नहीं है सोचने में कि सच में पूरे लूप में करंट है. जी हाँ, यहाँ भी करंट है, ऐसा हम बोलेंगे. पर ये नॉर्मल वाला यूजुअल वाला करंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है. एक मनगढ़ंत क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन यूनिट, करंट का डायमेंशन यूनिट होता है. इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं. और मज़ेदार बात, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इसी करंट के बराबर है. हम ऐसा सोच सकते हैं एक पल को कि ये करंट, यही करंट कंटिन्यूड है. देखिए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहाँ पे जो हम करंट है बोल रहे हैं, ये करंट इस पूरे एरिया ए में है. ये प्लेट का एरिया ए है, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं इसके पैरेलल एक सरफेस बना दूँ, ए एरिया, ये प्लेट का एरिया है और ये प्लेट का एरिया है और ये इमेजिनरी एरिया है, दोनों सेम साइज के. ऐसे सोचिए, लाल वाला. तो ये जो करंट है आई, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट, नॉट एग्जैक्टली दैट करंट. वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा सोच के आप किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो गलती नहीं होगी. आप तो ऐसा सोचो, ये जैसे कैपेसिटर का प्लेट्स मान लो सर्कुलर ही हैं. 1 मिनट के लिए ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है. 1 मिनट के लिए मान लो भाई कि ये कैपेसिटर के प्लेट सर्कुलर है. तुम तो ऐसा सोचो कि इस पूरे स्पेस में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. ये डिस्प्लेसमेंट करंट है. जी हाँ. और करंट डेंसिटी जिसको कहते हैं वो यूनिफॉर्म है. करंट पर यूनिट एरिया जो है, ऐसा एरिया अगर ले लें तो करंट पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है. तो पूरा ए एरिया अगर यहाँ लिया होता तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती? सीधा सीधा आई. ए बाई 2 एरिया लिया है तो क्या होगा? आई बाई 2. डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई के बराबर है, गौर करो. और अगर फुल एरिया लिया तो आई, आधा एरिया लिया तो आई बाई 2, 1/4 एरिया लिया तो आई बाई 4. तो अगली बार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये सब रामायण क्यों करेंगे? हम क्या लिखेंगे? प्लेट या एरिया ए बाई 2 लिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी? आई बाई 2.
सीधा। व्हाट इज आई? आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट हियर। और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आप जानते हो कि ये वैल्यू है। किसी टाइम टी पे स्विच ऑन करके टी सेकेंड बीत चुके हैं तो कैपेसिटर को चार्ज करने वाला करंट ये है। उस वक्त ये खाली जगह में एक अजीब से किस्म का करंट है जो फिजिकली एक्चुअली कुछ नहीं है। हाँ, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, बस वो एक मनगढ़ंत काल्पनिक चीज़ है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे वो जो काल्पनिक करंट है उसकी वैल्यू इस करंट के बराबर ही है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। उस पूरे एरिया ए में उस करंट की वैल्यू आई है। अगर एरिया a/2 लेंगे तो उसके थ्रू पास होने वाला करंट I/2 होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ऐसा ही ये डिस्प्लेसमेंट करंट बिहेव कर रहा है। हमने तो बड़े मेहनत करके ये कैलकुलेशन किया और आंसर क्या मिला? I/2। आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन ठीक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो जरूर देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अभी तक नहीं आया, किसी भी दिन आ सकता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।